छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। दोस्तों, आपको पता है दुनिया में ना, ये वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड उसमें बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम, क्या ही बताऊँ। पर वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट वी हैव राइट नाउ इज दैट कि द आइडियोलॉग्स ऑफ द वर्ल्ड, द थिंकर्स ऑफ आवर सोसाइटी, ऑफ आवर स्पीशीज seem to not have the correct idea about reality, about the things about which they are talking, है ना। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स है, पर मैं अब जिनकी बात कर रहा हूँ इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो इज इज मैं जिनकी बात कर रहा हूँ इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो इज मिस्टर जावेद अख्तर। अब जावेद साहब, उनके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट है। मैं उनका काम देख के बहुत सीखा हो, बहुत अपने आप को जाना हो, दुनिया के बारे में जाना हो, तो आई हैव नथिंग बट रिस्पेक्ट फॉर हिम। बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ वॉट ही इज टॉकिंग हियर, विच आई विल शो यू इन अ मिनट, ही इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। So before we get any further, let's just see what Mr. Javed Akhtar has to say. मैं आपको हमेशा चीजों का पता लगाने से, चीजों को समझने से, इंसान की मुसीबतों को सॉल्व करने से रोका है। हर धर्म में इंसान कैसे पैदा हो गया और ऐसा हो गया मालूम पूरी तरह से, कुछ मालूम है, कुछ नहीं मालूम। और ये लाइफ कैसे फॉर्म हुई मालूम है, थोड़ा पता है, थोड़ा नहीं। उन्हें सब पता है, उन्हें हर बात का उनके पास पूरा जवाब है। हमारे पास जितना हम जानते हैं उससे ज्यादा सवाल पैदा होते रहते हैं। हम कभी भी ऐसी जगह नहीं पहुंचे जहां हमारे पास सारे जवाब। फर्क एक है, वो अपनी जहालत की पूजा करते हैं, हम अपनी जहालत से लड़ रहे हैं, और यह फर्क हमेशा रहना चाहिए। तो धर्म ने आप तो यार देखो, जावेद साहब इज़ वेरी वेल renowned, वेरी वेल respected, वेरी wise, and he says a lot of beautiful things when he talks, but currently what he is saying is not correct. मैं उनसे सहमत इस बात पे नहीं हूँ कि वो उन्होंने कहा कि कभी भी किसी धर्म ने, सबसे पहली बात तो कभी भी किसी धर्म, ये सेंटेंस ही सेंस नहीं करता, क्योंकि दुनिया में आज अगर कोई एक धर्म है तो वो हिंदू धर्म है, बाकी आर नॉट धर्म, दे आर रिलीजन्स। क्रिश्चियनिटी इज़ अ रिलीजन, इस्लाम इज़ अ रिलीजन, एंड आई वुड इवन से दैट द करंट फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म is a religion. Right now, it is definitely the Hindu religion and not the Hindu dharma. But you see, ideologically, there is only one dharma, and that is Hindu dharma. और क्योंकि उन्होंने कहा कभी भी किसी धर्म में, which includes entirety of time, I just simply disagree with what Javed Sahab has to say. So, in today's video, we will just dive a bit deeper into why is it that he is wrong and why is it that religion is not equal to dharma. There is something called as non-translatables, which simply means that some concepts cannot be translated from one language to another. You can loosely translate them, but that makes them lose their essence. And one of the such things is the translation of dharma into religion, because religion is not equal to dharma. Plain and simple. Now you might ask, why Advait? Why are you saying this? Fair question. So let's look into it. You see, what dharma is, or what dharma can be translated into, can be duty, devotion, faith, maybe loosely, but maybe duty more so. Religion is not duty. Religion can be devotion, religion can be faith. But that devotion and faith comes on a condition. And that condition is that you have to accept our dear Lord Savior Jesus Christ in order to go to heaven. You have to accept Allah as the supreme God in order to reach Jannat. Dharma simply does not have any conditions like that. And if anybody tells you that you should believe in Krishna so you can go to heaven, they are lying to you. So religion and dharma are fundamentally different. You see, religion
is a human thing, whereas dharma is universal. A plant cannot get a religion, a tree cannot get a religion, the sun cannot get religion, the mountain cannot get religion, the river, the sea, the wind, the earth, the fire cannot get a religion. पर सूरज का धर्म है, नदी का धर्म है, सागर का धर्म है, बादल का धर्म है, बारिश का धर्म है, बूंद का धर्म है, इंसान का धर्म है, चींटी का धर्म है. धर्म is a much more broader concept than a religion. That is point number one. Because you see, everything has to do their duty. The duty of a rock is to be a rock. The duty of the river is to flow and meet the sea. The duty of an ant is to protect its colony or multiply its colony. And the duty of a human being is to be a human being. But you see, there is an issue when we apply dharma to human beings. Because it's easier for an ant to be an ant, much easier. It cannot be anything else. It cannot want. It does not have the human mind. It cannot want and it cannot get what it wants. A tree cannot want. A mango tree cannot want to give mangoes in the winter. It is against the laws of nature. And so it simply will not ever be able to do that. But a human being can want to eat mangoes in the winter, even though there is no mango tree giving mangoes, in the winter. सर्दी में नहीं मिलता आम basically. But we can do that. We can get to that. We can devise cold storage solutions, etc., etc., etc. We can do a lot of things and get the mangoes we want in winter because we want them. Because we have something called the human mind. It's supposed to be a brain. And where there is human mind, there is complexity. So we have to fight this complexity in order to follow our dharma. And that is why we have things like Vedas, Upanishads, the Bhagavad Gita, and all sorts of these things. Meditation, yoga, dhyan, sadhana. So that we understand what is the dharma of a human being. Because human mind is extremely complex. And that complexity can make us one with divinity itself. At a level that no ant, tree, elephant, mountain, river, rock can probably process. That is point number 2. So, when Mr. Javed Akhtar says that कभी भी किसी धर्म ने इंसान को सोचने की इजाज़त नहीं दी या हमेशा ही हर धर्म ने इंसान को सोचने से रोका है, that is absolutely not true. Because the Hindu dharma has always encouraged human thought, human intellect, human curiosity, and all those sorts of things. If you pick up any Ved or if you pick up the Bhagavad Gita, it is all about dialogue of Arjun with Krishna. It is because Krishna wants to solve Arjun's curiosity. So Javed Sahab says that कभी भी किसी धर्म ने इंसान को सोचने की इजाज़त नहीं दी, ये कहना बहुत गलत है. और मैं ये वीडियो बस इसके लिए डालना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हमारे बीच में ये जो आइडियोलॉग्स है, जैसे जावेद अख्तर साहब हो गए या फिर कोई और हो गया, वो चीज़ों लोगों के सामने जब चीज़ें बोलते हैं तो वो थोड़ा सोच के बोले, थोड़ा समझ के बोले, थोड़ी चीज़ों के बारे में और जानकार होकर बोले. क्योंकि इट इज़ एन एब्सोल्यूट फैक्ट दैट रिलीजन इज़ नॉट इक्वल टू धर्म. And there is no way that this idea should be propagated in our society today. That's it. So, guys, namaste. If you like this video, please like, share, comment, subscribe
subscribe to my YouTube channel for more videos like these. And if you like the video, like the video, comment on the video, and share the video with your friends and family. And I will see you in the next episode of Adi and Shiva. Until then, bye.